Hello dear students, welcome back. We are studying chapter Database Concepts. This is our second lecture on this topic. Today we are going to see data types used in base, as well as we are going to see all the things related to the table. So let's begin. So today we are going to learn data types in base, creation of table, inserting records in table, editing records in table, and finally deleting records in table. So let us see one by one. Data types of base. So before starting data types of base, why we want to use data type? That question comes in mind first. So why we are using data types? See, in database, we are going to create different types of database. Like if you want to create database depending on your school or college, or if you want to create database for employees. So depending on your database, you are going to create tables. Suppose if you are creating database for college, then for college database, what type of tables will be required? There can be many tables. From that, one table can be of students, means to keep the records of all students. Then one table will be of teachers, one table will be of library, one table will be of fees, one table will be of subjects allocated to teachers. Likewise, there will be lots of table. Okay, then so in that table, for example, if you are taking students table, so if you are creating students table, then for creating students table, what are the common fields which you require? Means what fields you will be requiring? Like we will require roll number, which is very essential. Then we require name of a student, address of a student, then mobile number, likewise, etc. There can be any number of fields in one table. Now, when you create these fields, that time they are going to ask you data type for that field. Means roll number is of which type, name is of which type. So for that purpose, you need data types. Okay, so getting my point, data type का use database में कब होता है? जब हम tables create करते हैं. tables create करते समय किस फील्ड को कौन सा टाइप का डेटा चाहिए वो भी पता होना चाहिए कि ये फील्ड कौन सा रिकॉर्ड यूज करने वाला है. नंबर्स का रिकॉर्ड चाहिए या टेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज व्हाट डेटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल रोल नंबर. नाउ फॉर रोल नंबर फील्ड which type of data you will use? Naturally you are going to use numbers, but in some cases like in employee database, in that case what happens, they might have employee id. They might have what? Employee id. Each employees, they will be having different ids, right? So there can be the case that their employee ids will be combination of numbers and what? Letters. In that case we cannot use numbers, because if you're using number data type, then only numbers can be entered. We cannot enter text. But for combination of numbers and text, we want to use another type of data, like we can see character data and all that things we are going to use. So this is what data types. For name, you're going to use text, or you can use character data type. We will see the data types, then we'll come to know for name which type of data you're going to use, then for which type of data you should use. Okay, so this is the need of data types in database. Now we will see different types of data types. So first type is numeric types. First type is numeric types. Numeric means what? Numbers. So in this also we are having different types of numbers. So see, these are all different types of numeric types. ये सारे क्या है? Numeric के types है, numbers के types है. Okay, so from that first we are going to see tiny integer. Tiny integer data type is what? Tiny int. So tiny int full form will be what? Tiny integer. So from the name itself, नाम से ही पता चलता है tiny means क्या होता है? बहुत छोटा सा.
Okay, so if you want to store smallest integer type, then you can use which data type? Tiny int. Range is 0 to 255. So tiny int डेटा टाइप कब यूज करना पड़ेगा? जब आपको बहुत छोटा नंबर चाहिए. आपकी अगर रेंज, अगर आपके डेटा की रेंज सिर्फ 0 से लेकर 255 तक कौन सी भी हो सकती है, so that time if you want to use, you can use this tiny int. For example, if you're taking roll number field, so for roll number field, if you are going to enter roll numbers from 1 to 200, then you can use this data type tiny int. Okay, that time you can use which data type? This tiny int. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि रोल नंबर का रेंज आपका, अगर आपको सिर्फ 200 रोल नंबर्स एंटर करने हैं, सो फॉर दैट पर्पस आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? टाइनी इंट का. लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा बड़ा रेंज यूज करना है, मीन्स ज्यादा रोल नंबर्स लिखने हैं, तो आपको आगे के डेटा टाइप्स देखने पड़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट डेटा टाइप इज व्हाट? स्मॉल इंटीजर. Small int means this data type small int means what? Small integer. It stores small integer. Range is -2 raised to 15 to 2 raised to 15 minus 1. See this -1 मैंने बाजू में लिखा है. Means after this number, whatever number comes of this, that power should get minus with 1. Okay, so if you calculate this value, you are going to get the answer as 32,768. Okay, so the answer of this will be what? 32,768. So the range will be starting from minus 32,768 to plus. Okay, no need of saying plus, you can just say 32,767. Why 68 not why 67? Because we are minusing it with 1. Okay, minus 1. 768 को अगर आपने -1 कर दो तो आपको क्या आंसर आएगा? 767. So it will be 32,767. Okay, that is the range. अगर आपको इस रेंज में नंबर्स एंटर करने हैं तो आपको कौन सा डेटा टाइप देना पड़ेगा? स्मॉल इंट. ओके, सो यू आर गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस? टाइनी इंट मींस व्हाट? उसका रेंज 0 to 255 है. अगर इसी बीच में आपको नंबर एंटर करना है, देन यूज टाइनी इंट डेटा टाइप. But if you want to use the range more than 255 and less than 40,000, then you can use 40,000. No, 32,767 is the limit. So उससे कम चाहिए रहेगा तो you can use this, or till 767. Okay, उससे ज़्यादा चाहिए तो we cannot use small int. Getting all of you what is the small integer? Okay, range is what? So now next one is integer. Integer data type is integer. It stores integer. Most commonly used data type. So this integer mostly हम लोग है ना tiny int या small int का use नहीं करते हैं. हम लोग integer and this numeric like this type of data types we are going to use. So mostly this is the common type of data type we are going to use, and the range is -2 raised to 31 to 2 raised to 31 minus 1. यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, लेकिन अभी आप इसका एक अंदाज लगा लो. Okay, what is the answer of this? Because nobody is going to tell you to calculate the range. You should know that yes, if this is 2 raised to 15 is 32,768, then this will be double of that, because 31 means what? 15 ka double, so double value. Okay, so if you want that range, then you can use which data type? Integer data type. Then next one is big integer. Big integer, here big int. Big int is the data type for big integer. It is going to store big integer. Range is -2 raised to 63 to 2 raised to 63 minus 1. Means this is again a big. From the name itself we can say it is a big. Means integers का सबसे बड़ा integer कौन सा है? Big integer. Okay, then यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 63 हो गया, और भी डबल हो गया. Okay, so this is about integers. Now this were tiny integer, small integer, integer, big integer. So this all integers
Smallest integer will be, if in question, if in exam the question is asked small integer, the smallest integer, then you have to write tiny integer, and the biggest integer you have to write big integer. Okay, then next data type is number. Data type is numeric. Okay, name is number and data type is numeric. It stores a number, range is unlimited. Now see what is the difference. This is also storing a number, but here the range is unlimited. Means यहाँ पे limitation नहीं दिया है कि इतने तक ही range में use कर सकते हैं. यहाँ पे आपको जितना बड़ा नंबर चाहिए उतना बड़ा नंबर आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे वैसा था क्या? नहीं. यहाँ पे सबके लिए हम लोगों ने रेंज लिखा है. ओके, सो ऑल दिस इंटीजर्स वे हैविंग व्हाट? लिमिटेशंस. इतने लिमिट तक ही उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन नंबर के लिए, न्यूमरिक डेटा टाइप के लिए हम लोग को रेंज का जरूरत नहीं है. यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स का रेंज आप यूज कर सकते हो. ओके, देन next one, decimal. Decimal, this data type is decimal only, and this is going to store a number with decimal point and range is unlimited. So this is same as number. Okay, decimal or number, they are working in similar fashion. Only the difference is that in number you are not going to use decimal point, but in decimal you are going to use number with decimal point. Okay, number का use करना है with decimal point. And the range is unlimited. Both cases, range is what? Unlimited. जितना चाहिए उतना बड़ा नंबर आप लिख सकते हो. लेकिन रेंज दिया कैसे जाता है वो, that I will going to show you. That way I will show you. See how you have to write in this fashion. Decimal. See, when I'm going to teach you practicals, that time we will see this also, decimal. Okay, this value you can use for money, means for if you want monetary values, money values, that time you can use this data type decimal. Okay, now see, here I am writing 10, comma 2. So you have to mention it in this way. What is the meaning of this? Actually, the meaning of this will be what? You have to write 10-digit number with what? 2 decimal points. Means आपको 10 digit, suppose any number is there, 2, 3, 8, 9, 8, then 7, 8, 1, 4. How many digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and one more digit I will give you, 1. Okay, now it is 10-digit number, but this 10-digit number, it should contain decimal point after 2. Okay, so means यहाँ पे आपका decimal point आएगा. Okay, see, this is the decimal point. So see, decimal 10,2 means you are going to write 10-digit number with 2 decimal places. So this is a 10-digit number. If you count, see, this is 9 only. Yeah? This is 2, 3, 8, 9, 8, 7, 8, 1.41. Okay, so this is a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10-digit number with 2 decimal places. So आपको अगर आपको 3 देना है तो यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा. ओके, लाइकवाइज यहाँ पे ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इट शुड बी 10 डिजिट, इट कैन बी एनी डिजिट नंबर बिकॉज इट इज अनलिमिटेड, रेंज इज अनलिमिटेड. सो गेटिंग व्हाट इज दिस डेसिमल? ओके, देन नेक्स्ट वन, रियल. नाउ व्हाट इज रियल? नाउ सी वन मोर थिंग, this real, double, float, these three are having the data type real, double and float only, and this three work in similar fashion. तीनों भी similar fashion में ही work करते हैं. What is the work of them? See, stores a number with or without decimal point. So if you want number with decimal point or without decimal point, use any of these three. It is used, no, sorry. See, in float, it will be used only for with number with decimal point. Okay, so यहाँ पे real numbers और double के लिए हम लोग number with or without decimal point you are going to use. But only difference between float is that here it is going to allow only decimal point values. Suppose you are writing number without decimal point, then it is going to write decimal point itself by
itself only, means right, if you're writing 23, then it will write 23 point, if it is taking two decimal places, then it will write two zeros. Okay, so for this now floating data type, float data type, what is required? Decimal point is required. For real and double, it is going to take number with or without, means you can enter any number. If it is not having decimal point, then also it is considered. If it owns decimal point, then that is also considered. Now what is the difference between then this and this? That I'm going to tell you. Now see, for this real, double and float, limit is range, means here we are having limited range, यहाँ पे limited range दिया रहता है. न्यूमरिक और डेसिमल डेटा टाइप में लिमिटेशन है क्या? नहीं, हम लोग कितने भी डिजिट का नंबर एंटर कर सकते हैं. लेकिन रियल और डबल में, रियल, डबल और फ्लोट, इन तीनों के लिए लिमिटेशन है. वहां पे हम लोग कितने भी डिजिट का नंबर एंटर नहीं कर सकते, वहां पे लिमिटेशन दिया है. डेसिमल पॉइंट 15 डेसिमल प्लेसेस तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है. ओके, देन in this case what happens, you're not going to get the accurate answer. Okay, so accuracy is not there, means what, you're having accurate answer, यहाँ पे accuracy रहता है, but यहाँ पे accuracy नहीं रहता है. so यहाँ पे कैसे रहता है, जहाँ पे आपको approximate value चाहिए, वहां पे हम लोग real, double, float का यूज कर सकते हैं. Okay, see, when we are going to use real, double, float, when you need approximate value, when you do not want accurate number, that time you can use this data types. If you want accurate number, then you are going to use numeric and decimal data type only. Okay, so I hope this difference between numeric, decimal and this three is clear to you. ये कब use करना पड़ता है और ये कब use करना पड़ता है. Okay, so this is all about the numeric types. See, do not get confused. In exam, most probably they can ask you only the data types, which data types are used in base. आपको सिर्फ data types पता होने चाहिए मोस्टली कि ये base में कौन से data types आ रहे हैं. उन लोग इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे कि रियल क्यों यूज होता है, डबल क्यों यूज होता है, फ्लोट क्यों यूज होता है. ओके, so don't get confused. We are not going to, mainly in coding also, we are not going to use all this type of data type. We are going to use main data types only. Okay, next we will see the alphanumeric data type. Alphanumeric types. Alphanumeric. Here this alpha means alphabet and numeric means number. So this type of data type you are going to use where the field requires combination of alphabets and numbers. So alphanumeric type हम लोग कब यूज करने वाले हैं? जब आपको किसी फील्ड में numbers और alphabets दोनों भी चाहिए. That time we are going to use which types? Alphanumeric types. Now in this alphanumeric also there are different types. So see, these are the different types. Memo, see actually these are just the name. Main is this, data type main hai. Long varchar, char, varchar, ignore, case. Now what is this actually? See, long varchar, the name has been given memo. So this is actually used to store descriptive type of information, that is large block of text like article text. So what is the meaning of this? Actually, it means that if you want to store lengthy text, अगर आपको lengthy text लिखना है तो उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? long varchar. Okay, so long varchar is used for lengthy text. For example, if you want to write history of any employees, or if you want to write autobiography, or if you want to write documents, articles, then that time we are going to use long varchar data type. Okay, clear? When we are going to use long varchar data type? Okay, जब आपको कोई बड़ा आर्टिकल, बड़ी चीज लिखनी है, टेक्स्ट, ओके, किसी के बारे में लिखना है, so for that purpose छोटा टेक्स्ट तो लिख के फायदा नहीं होगा. Okay, for that time you are going to use this long varchar. Okay, then next one is text fix data type is char. Now what is this char data type? Actually it is used to store the fixed size text. यहाँ पे क्या होता है? Now see, here both, in this both we are going to see the difference. Okay, so char means what?
फिक्स्ड, जो भी आपने उसके लिए साइज दिया रहेगा वो उसको फिक्स करके रखेगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट एंड शो यू. सपोज फॉर नेम आई एम यूजिंग दिस डेटा टाइप कैर. ओके, मैंने नाम फील्ड लिया है, नेम फील्ड लिया है, उसके लिए मैंने कैर डेटा टाइप लिखा है और मैंने लिखा है कैर 30. ओके, आई एम यूजिंग दिस डेटा टाइप. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, कैर 30 मीन्स क्या हो जाएगा, 30 का जगह फिक्स हो गया नाम के लिए. ओके, नेम फील्ड के लिए 30 का जगह फिक्स हो गया. तो अगर अभी आप छोटा नाम लिखोगे, अगर आपका कैरेक्टर्स मीन्स आपका नाम 30 कैरेक्टर्स से कम है, 15 कैरेक्टर्स का है. ओके, आपका नाम अगर 15 कैरेक्टर्स का है तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 15 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए टोटल, 30 में से उसने 15 यूज किया तो कितना रह गया 15. 15 को क्या कर देगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो उसमें स्पेस डाल देगा, जगह डाल देगा. इससे क्या हो जाता है कि वो उतने साइज को रिजर्व करके रखता है. ओके, मीन्स उतनी जगह को उसने रिजर्व करके रखा है. यस, ये पूरा 30 जो साइज है ये मेरा है, ये मैं किसी और को नहीं दे सकता. इस तरह से वो उसको फिक्स करके रखता है. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, actually by using this character data type you're going to waste your memory space also. इससे क्या होता है कि मेमोरी का स्पेस भी वेस्ट हो जाता है. ओके, क्योंकि ये क्या करता है, यूज तो 15 कैरेक्टर्स का कर रहा है, 15 कैरेक्टर्स क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बट उसने तो मेमोरी में उतना स्पेस रिजर्व करके रखा है, तो क्या हो जाता है, मेमोरी का स्पेस वेस्ट हो गया, वो किसी और को भी दे सकता था वो मेमोरी का स्पेस, राइट. सो द अपोजिट इज varchar. ओके, varchar इसके अपोजिट है, मीन्स varchar स्टोर्स वेरिएबल साइज टेक्स्ट. यहाँ पे जितना कैरेक्टर्स यूज करेंगे उतना साइज वो यूज करता है, बाकी का वो छोड़ देता है. ओके, जितना आपका नाम रहेगा उतना ही साइज, उतना ही वो यूज करेगा मेमोरी, बाकी वो रिलीज कर देगा. ओके, वो अपने पास खुद के पास नहीं रखता है, वो दे देता है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन char and varchar. Next one is varchar underscore ignore case. Now what is this? Now actually this is varchar's extension only. So here one thing will be common in between both of them. What is that? Fixed size. Okay, यहाँ पे हमेशा जितना वेरिएबल को साइज रखेगा उतना ही साइज वो लेगा. Okay, then comparisons are not case sensitive but stores capitals as you type them. What is the meaning of this? Comparisons are not case sensitive मीन्स यहाँ पे वो कंपेयर नहीं करेगा कि छोटा है या बड़ा है. ओके, यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे वो सब कैपिटल में ही टाइप करने वाला है. अगर आपने इग्नोर केस डेटा टाइप यूज किया सो वो क्या करेगा, पूरे आपके जो आप लिखोगे फील्ड्स का नाम, फील्ड सपोज नेम के लिए आपने varchar इग्नोर केस लिखा है तो नाम आप जो भी लिखोगे वो सब कैपिटल में आएगा. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू कंपेयर कि ये स्मॉल है या कैपिटल है. आप कैपिटल में लिख रहे हो तो भी वो उसको कैपिटल में लिखने वाला है, आपने स्मॉल में लिखा तो भी वो उसको कैपिटल में ही लिखेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट varchar ignore case. Okay, now I hope this all alphanumeric types are clear to you. All this long varchar, char, varchar ignore case is clear to you. Okay, now next type is binary types. Oh, before that I will rub this char. Okay, now we will see binary types. These three are the binary types: image, binary fix. For this we are going to use data type which? Image, long var binary. Now see, binary means what? Binary हमेशा क्या होता है, 0 और 1 में लिखा जाता है. ये मशीन लैंग्वेज है. Okay, what is this binary? Binary means 0 and 1. So in 0 and 1 we are going to write this is a machine language actually. ये अंदर होता है, आप जो भी लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर. So this image, this data type is long var binary. This type are for storing binary data like images. तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपको इमेजेस स्टोर करने हैं. ओके, इमेजेस या साउंड ये सब अगर आपको रिकॉर्ड में चाहिए, डेटा टाइप में चाहिए, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज लॉन्ग var binary. ओके, लॉन्ग var binary. ये डेटा टाइप हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपको इमेजेस चाहिए, क्योंकि वहां पे भी बाइनरी होते हैं, वो भी बाइनरी में होते हैं. फिर साउंड चाहिए तो वो भी वो
हम लोग इस डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज where binary. Where binary means what? It stores binary information of variable length. यानी वेरिएबल का जितना भी लेंथ रहेगा उतना ही बाइनरी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा. यानी जो भी आपने लिखा रहेगा वो उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 केस में, और जितना भी लेंथ आपका वेरिएबल का रहेगा उतना ही लेंथ का वो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा. ओके, मीन्स अगर आपने सपोज आपका नाम लिखा है तो वो क्या करेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है. ओके, 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और जितना लेंथ आपके नाम के लिए लगा रहेगा उतना ही वो बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए रखेगा. नेक्स्ट इज बाइनरी. इट स्टोर्स बाइनरी डेटा ऑफ फिक्स्ड लेंथ. यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ मीन्स व्हाट, जैसे कैरेक्टर में था वैसे ही यहाँ पे रहेगा. मीन्स सपोज आपने 30 लिखा है तो पूरा उसका 30 लेंथ वो यूज करेगा. ओके, मीन्स पूरा इंफॉर्मेशन बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और अगर डेटा मीन्स लेंथ कम है फिर भी उसको वो जो भी आपने बाइनरी में दिया रहेगा 30 दिया है साइज, तो वो पूरा फिक्स 30 ही इसमें उसको कन्वर्ट करेगा. ओके, so this is all. See, simply difference is that this is going to convert it into binary. ओके, ये सब बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके लिए डेटा टाइप्स यूज करते हैं. ओके, लॉन्ग वेर बाइनरी और बाइनरी. देन so don't go deep in all these things, these are not important to you. Okay, only mostly we will see image if possible, otherwise we are going to ignore this binary types also. You should just remember for exam, from exam point of view, ये सिर्फ डेटा टाइप को याद रहने चाहिए कि कौन से हैं. ओके, ये आपको करने को प्रैक्टिकल्स में नहीं बोलेंगे उन लोग. okay, see if it is there we will see, otherwise if we are getting time we can see this image one, क्योंकि हम लोग image तो store कर सकते हैं. okay. Okay, so this is all about alphanumeric and binary. Next we will see date and time types are also there, so let's see that also. See, date time types. Now what are this? Date, for that data type is date. It stores month, day and year information. अगर आपको date लिखना है, आपके इसमें डेटा टाइप डेट चाहिए तो आप डेट का डेटा टाइप यूज करो. वो किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर आपका ईयर आएगा. ओके, दिस फॉर्मेट इट इज गोइंग टू यूज फॉर डेट. देन सिमिलरली फॉर टाइम you can use data type time and it is going to store hour, minute and seconds info. okay, so उसका फॉर्मेट कैसा आएगा, पहले hour, फिर minute, फिर seconds. Then lastly date or time, this is timestamp. So this is going to store date as well as time. अगर आपको दोनों भी चाहिए एक साथ, so you can use which data type, timestamp. okay, your both date will also come and time will also display. Time will also be displayed. Now other types, other variable types are also there. Let us see that also. Yes or no. This is data type called as binary. So for yes or no, it is we are going to use which data type, binary. It is going to store boolean type of data. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, एस और नो, ऑन और ऑफ, ये जो डेटा टाइप्स रहते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बाइनरी डेटा टाइप. यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, आइदर दिस or that, either yes or no, only one value is used. So it is what, boolean type of data. Then other stores any other object. Other data type if you are going to use, then it is going to store any other. जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़े उसमें से अगर जो भी डेटा टाइप आपका नहीं है वो अगर आपको चाहिए तो आपको अदर में यूज करना पड़ेगा. अगर आपका जो भी फील्ड आपको यूज करनी है वो फील्ड हम लोग जितने डेटा टाइप्स यूज किए उसमें नहीं चाहिए, अदर में चाहिए, तो use other data type. okay, it is going to store any other object. So we have seen all the data types, numeric, alphanumeric, then what, date, time and other. So when we will do our practical, that time we will see this data type in practical. okay, now just remember all these data types. That's it for data types. Now what we are going to see we will see now table. मैंने last lecture में, in first lecture of database concept, I have taught you different database objects. So in that we have studied about tables, queries, forms, reports. These are the database objects. So from that database object,
First database object which we are going to study is which? It's table. Okay, so we will see about tables now. Creating a table. So now here just we are going to see theory part. टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग डेटाबेस में, ये हम लोग सिर्फ थ्योरी देखने वाले, लेकिन एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियरली समझेगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग वो आप लोग फॉलो कर सकते हो जब आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे। अगर आप लोग आपके घर पे प्रैक्टिकल करोगे तो जो भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो आपको उसी तरह से यूज करके दिखने हैं कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। Otherwise, when I will show you the practicals, that time it will be clear to you how to create a table. Then once you know how to create a table, then you can write points of your own also. So let us see the point. First is open a database and from left pan click on the tables icon. So जब आप database open करते हो, first you are going to create the database. Okay, सबसे पहले आपको database create करना पड़ता है, उसी के बाद आप ये table icon वगैरह use कर सकते हो. Okay, tables use create कर सकते हो. So first you will create a database and once you open your database, you can see different database objects on the left pan. मैंने आपको ये बताया था last lecture में screen कैसा दिखता है, तो वहां पे आपको दिखाया था मैंने वर्किंग एरिया इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लेफ्ट पैन एंड राइट पैन। तो मैंने वहां पे आपको लेफ्ट पैन में दिखाया भी था डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। There we have seen table, queries, forms, reports. Okay, so from that you have to click on which icon? Tables icon. Okay, table icon पे क्लिक करो, फिर क्या करोगे? From right pan click on the create table in design view. तो राइट पैन जो था वर्किंग एरिया में, लेफ्ट पैन और राइट पैन होता है, फिर राइट पैन में आपको टेबल के बारे में लिखाई देगा। ओके, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। देन अ विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, टाइप फील्ड नेम, फिर एक विंडो दिखेगा, फिर विंडो में आपको फील्ड के नाम्स टाइप करने, आपके टेबल में कौन से फील्ड्स होने चाहिए वो आपको लिखने हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम, ऑल दैट थिंग्स। ओके, सेलेक्ट फील्ड टाइप, field type means type of data to be stored in that field. Example, name field should have text as a field type. तो ये समझा field name क्या होता है, field type क्या होता है। field name फॉर एग्जाम्पल आपने रोल नंबर लिखा है, ओके, तो रोल नंबर को कौन सा फील्ड का टाइप चाहिए, आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, देन यू यूज एनी न्यूमरिक टाइप, ओके, जो भी आपको चाहिए। देन आपको नाम लिखना है, सो यू कैन यूज विच वन, you can use alphanumeric. Okay, in alphanumeric you can use any one of the types which we have seen. Okay, then that is field type. आपको field name के सामने आपको field का type भी select करना पड़ता है। Then in next column type the description about the field. Now next column there will be description. वहाँ पे एक description का भी part रहेगा, 3 columns रहते हैं, field type, field name, सॉरी फर्स्ट फील्ड नेम रहेगा, फिर फील्ड टाइप और फिर डिस्क्रिप्शन, वो हम लोग प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है आपके फील्ड के बारे में तो आप वो लिख सकते हो। ओके, देन इन द बॉटम सेक्शन in the field properties select yes for entry required property. in the bottom section जहां पे आपने fields का सब लिखा है उसके नीचे एक section रहता है, वहां पे field properties रहते हैं, select yes for entry required property. Okay, so see here we are going to just see the points how to write, क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। You can set default value and for numeric field types you can set decimal places also. In this way create all the fields. So अगर आपका न्यूमरिक फील्ड है, अगर आपने रोल नंबर लिया है, न्यूमरिक लिया है, अगर आपको उसके लिए नंबर के लिए, रोल नंबर के लिए आपको डेसिमल चाहिए क्या, नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू सेट डेसिमल फॉर दैट। बट अगर आपने सैलरी लिखा है तो आपको डेसिमल लग सकता है शायद, ओके, सो या फिर परसेंटेज फील्ड लिखा है, परसेंटेज फील्ड लिखा है तो भी आपको डेसिमल लगेगा, तो आपको बॉटम में जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको डेसिमल प्लेसेस का न्यूमरिक फील्ड यूज करना है। ओके, देन right click on small button present on the left side of the field name which is decided as primary key and select primary key option. Okay, this also we are going to see what is primary key and foreign key. So means अपने फील्ड के नाम लिखें, ओके, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर।
सो इसमें से जिस फील्ड को आपको प्राइमरी की देना है, प्राइमरी की किसको देते हैं, जो यूनिक होता है। ओके, प्राइमरी की किसको देते हैं, जो यूनिक होता है, मीन्स विच कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ओके, सो फॉर दैट केस वी आर गोइंग टू, फॉर दैट फील्ड यू आर गोइंग टू यूज व्हाट, प्राइमरी की। सो आप मुझे बोलो, रोल नंबर सबका डबल रहता है क्या, सेम रह सकता है, नहीं। तो इसको प्राइमरी की दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। नेम को दे सकते हैं प्राइमरी की, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक बच्चे का नाम दूसरे बच्चे का जैसा हो सकता है, मींस टू स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम नेम। ओके, सो नेम कैनॉट बी प्राइमरी की। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट सच अ फील्ड टू क्रिएट अ प्राइमरी की which field is unique, okay, which is having unique data. Okay, then lastly click on the save icon to save the table name for the table and click on OK. What is the meaning of this? हो गया आपका सब फील्ड्स एंटर करके एक टेबल के लिए, तो सेव आइकन पे क्लिक कीजिए और फिर टेबल का नाम दो, फिर उसको ओके करो, फिर आपका टेबल हो गया क्रिएट। नाउ टेबल क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, सी, ये सब आपको बाय हार्ट नहीं करना है। क्रिएटिंग टेबल, इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, एडिटिंग रिकॉर्ड्स, ये जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ अभी इसके बाद, वो ये क्रिएशन मीन्स जो भी प्रैक्टिकल्स के पार्ट है वो आपको बाय हार्ट नहीं करने। डू नॉट बाय हार्ट ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये कैसे टेबल क्रिएट करना है वो बताया है आपको। टेबल क्रिएट करना एक्चुअली आना चाहिए, प्रैक्टिकल आना चाहिए आपको, ये इसका थियरी का जरूरत नहीं है, इसकी थियरी का जरूरत नहीं। ओके, देन लेट अस सी हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल। Inserting records in the table. What you'll do, you will open a database from the left pan, click on the tables icon. Same, फिर से वही, left pan में आपको tables दिखेगा, tables पे click करो. Then in the right pan from the bottom part, double click on the name of the table in which data is to be inserted. अब क्या होता है, right pan में आपको bottom side में आपके टेबल के नाम दिखेंगे, जो जो टेबल्स आपने बनाए रहेंगे। ओके, फिर आपको कौन से टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करने का है, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, देन विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, फिर एक विंडो आ जाएगा, फिर आपको डेटा उसमें टाइप करना है, फील्ड। ओके, टाइप डेटा अंडर ईच फील्ड एंड कंप्लीट वन रिकॉर्ड, इन दिस वे ऐड सम रिकॉर्ड्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विंडो अपीयर हो जाएगा, फिर उसमें आपके सारे फील्ड्स लिखे रहेंगे, फिर आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। ओके, पूरे फील्ड्स पहले एक रिकॉर्ड के पूरे फील्ड्स लिखो, फिर दूसरे रिकॉर्ड पे जाओ, फिर दूसरा रिकॉर्ड करो, ऐसे आपको कुछ रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ओके, then click on edit data icon to make edit mode off, a window will appear. क्या करना है आपको, क्लिक ऑन एडिट डेटा आइकन, वहां पे एक एडिट डेटा आइकन रहेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिट मोड ऑफ हो जाएगा, मीन्स हम लोग एडिशंस नहीं कर सकते, वो ऑफ हो जाएगा। अ विंडो विल अपीयर, देन क्लिक ऑन यस आइकन एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन, फिर वो होने के बाद में आपको यस आइकन पे क्लिक करना है और फिर आपको वो विंडो क्लोज कर देनी है। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बाय हार्ट दिस पॉइंट्स, बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल्स करो तो आपको समझेगा। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी, अभी आपका रिकॉर्ड्स एंटर हो गया, आपके इसमें आपने रिकॉर्ड्स एंटर किया, रोल नंबर 1 नाम ये लिखा, एड्रेस लिखा, फिर मोबाइल नंबर, इसी तरह से रोल नंबर 2 का डेटा एंटर किया, 3 4 5 6 ऐसे हम लोग ने रिकॉर्ड्स एंटर किए इसमें। ओके, देन अभी एंटर किए, अब क्या होता है, कभी कभी एंटर करने के बाद ऐसा लगता है ना कि ये रिकॉर्ड जो है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो आपको लगता है कि इसको एडिट करना चाहिए, इसका मोबाइल नंबर गलत लिखा है, इसका एड्रेस गलत लिखा है या नाम गलत लिखा है, जो भी हो, तो जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने डेटा तो एंटर किया लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, सो दैट टाइम यू वांट टू एडिट दैट रिकॉर्ड। फिर एडिट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। Editing a record in the table. Now how you are going to edit a record? फर्स्ट डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड टेबल, जो भी टेबल पे आपको एडिट करना है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग, जिस रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है, जो भी रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देन डू नेसेसरी चेंजेस, आपको जो चेंजेस करने हैं, अगर आपको नाम चेंज करना है रोल नंबर 6 का, तो आप रोल नंबर 6 पे जाओ,
उसके ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करो, फिर उसका जो भी नाम आपको चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है या मोबाइल नंबर जो भी है वो आप चेंज कर दो। ओके, एक बार आपका काम हो गया तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन एडिट डेटा आइकन टू मेक एडिट मोड ऑफ। फिर से वैसे ही एडिट डेटा आइकन पे क्लिक करो जिससे कि एडिशन ऑफ हो जाएगा, फिर आपको एडिट करने का जरूरत नहीं है। देन क्लिक ऑन यस एंड this is how we are going to edit the record. Lastly, if you want to delete any record, अगर कोई कॉलेज छोड़ के जा रहा है कोई स्टूडेंट, तो आपको अगर उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो आप कैसे करोगे वो देखेंगे अभी। Deleting a record from the table. Now see, here we are going to delete record, not table. हम लोग टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करने वाले, टेबल को डिलीट नहीं कर रहे हम लोग। ओके, फॉर डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू, डबल क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन द रिकॉर्ड विच यू वांट टू डिलीट। सो जिस भी टेबल में से आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है उस टेबल पे आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना है। ओके, सॉरी, देन यू वांट टू क्लिक ऑन द रिकॉर्ड विच यू वांट टू डिलीट। आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है उसके ऊपर जाओ, उसको क्लिक करो। देन व्हाट यू विल डू, देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू। ओके, फिर आपको मेन्यू एडिट मेन्यू पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर क्लिक करके आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिलीट रिकॉर्ड। ओके, फिर क्या हो जाएगा, डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया तो फिर आपसे वो पूछेगा कि वेदर यू वांट टू डिलीट इट परमानेंटली। So yes, if you click on yes, what will happen? Your data will be getting deleted permanently. Okay, आपका रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर से वो रिकॉर्ड नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको इंसर्ट ही करना पड़ेगा। ओके, सो yes, this is all about today's lecture. So we have seen different data types. In exam, they can ask you different data types used in base, लेकिन उन लोग आपको डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे कि इस डेटा टाइप का डेफिनेशन बताओ, इस डेटा टाइप का डेफिनेशन बताओ। They will ask you question in objectives like if I'm using image, then which type of data I'm going to use. Okay, or if I'm using combinations of alphabets, or suppose I want a fixed type of characters, then which data type I will use, ऐसे पूछेंगे। So आपको data types अच्छे से आने चाहिए। Okay, आपको उसका definition नहीं लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि ये data type किसके लिए यूज होने वाला है। Okay, so then we have seen how to create table, how to insert records in table, how to edit table and how to delete record in the from the table. So ये जो था ये था प्रैक्टिकल का पार्ट। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने टेबल के लिए देखे हैं वो आपको एग्जाम में नहीं पूछते, मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल, editing, deleting and whatever. They are not going to ask you. But still last year I have seen that they have never asked like this type of question. They were also having all these things, but in that means till last year we were using MS Access for database. This year we are using LibreOffice for database. Okay, so they never asked an exam about the steps for creating and deleting and all that things, but in practical you should know how to do it. So हम लोग प्रैक्टिकल्स में देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो डोंट बाय हार्ट ऑल द स्टेप्स फॉर all whatever steps we have seen for table. Similarly, we are going to see for query also, for forms also, and for reports also. So there is no need of by hearting. Do practical, you will come to know what are the steps we have to do. Okay, so this is all for today's lecture. Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.